Okay, and we will give her due regards because she is the lady who is basically responsible for one of the mega discoveries in the field of molecular biology. So Rosalind Franklin. Okay, Rosalind Franklin and her student. समझे कि नहीं? And her student, her name is मैंने G.F. Gosling. Okay, तो उनका एक्चुअली वो और उनके स्टूडेंट हैं who was responsible for that activity. Okay, I'll tell her उनका full name. क्या एक सेकंड गॉसलिंग का पूरा नाम बता दिया जाए आपको. She died actually due to ovarian cancer at the age of 37. You see, that's really a misery. Okay. Not team member and Clug continued research in our private chemistry. Actually, जो Kim and Clug हमने discuss किया था ना, Clug, तो Clug is actually one of our colleagues. ठीक है? कहाँ गया गॉसलिंग ढूंढोगे तो फिर मिलता नहीं है. चलिए, so now we will not waste time. तो actually सर हाँ बोलो. सर उसका नाम है रेमोंड जॉर्ज गॉसलिंग. Yes, very good. Thank you very much, Arpan. So उनका नाम हम लोग उसको एडिट कर देते हैं. कहाँ गया ये? तो हम लोग एक नया क्रिएट कर लेंगे. तो we will write, we'll give due regards to Rosalind Franklin and a student Raymond जॉर्ज गॉसलिंग. एक्चुअली ये दोनों ही वो वर्क करने में, बिकॉज अकेला तो कर नहीं सकता ना कोई. बट अनफॉर्चुनेटली मॉरिस विल्किंस वाज आल्सो इन दैट लेबोरेटरी, सो दैट शी वाज अनअवेयर. ओके, बिकॉज उन्होंने जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बोला था कि भाई मुझे यहाँ का, व्हेन दे हायर्ड हर, शी हैड ओनली वन कंडीशन, that she will work only if nobody is working on the same field. But she was actually what? Lied. और कुछ बताया नहीं गया. ठीक है. So now, तो Rosalind Ellie Franklin was an English chemist and X-ray crystallographer whose work was central to understanding the molecular structures of DNA, RNA, viruses, coal, graphite, सब कुछ, क्योंकि वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करती थी ना. Now, although her works on coal and viruses are appreciated in her lifetime, her contributions to the discovery of the structure of DNA were largely recognized posthumously. Why posthumously? Because by that time she was no more. है कि नहीं? तो वो इस दुनिया से जा चुकी. Because she died very early, and why she died? Because of radiation exposure. Okay, so तो अर्निंग रिसर्च, तो हम लोग ये इनका लिखेंगे. ओके, ओके, now here, so earning a research fellowship, she joined the University of Cambridge Physical Chemistry Laboratory under Ronald George Refford Norris
who disappointed her for his lack of enthusiasm. माने वो जो जिस तरह से वो vivacious थी, तो she was also not उनका जो guide था, she was not as what exciting as she was. So that is why she got bored. So she became a research associate. Okay, she became a. Actually, I wanted to tell you where she had done her work. Okay, so she she became a research associate. She became a research associate at King's College London and worked on X-ray diffraction studies, which would eventually facilitate the discoveries. Okay, so we eventually facilitated the discoveries in 1953. After 2 years, owing to disagreement with her director and more so with her colleague Morris Wilkins, she was compelled to move to Birkbeck College. Okay, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया. Okay, at Birkbeck, John Desmond Bernal, chair of the physics department, offered her a separate research team. Okay, and she died in 1958 at the age of 37 of ovarian cancer. है कि नहीं? तो ovarian cancer से उनकी मौत हो गई. Now, why should we read this? We should give due regards. And ये आपको सिखाएगा कि actually how people work. है कि नहीं? And अच्छा काम करना इतना आसान नहीं है दुनिया में. So Franklin is best known for her work on X-ray diffraction images of DNA, particularly photo 51. ये याद रखना. यही जो फोटोग्राफ मैंने आपको दिया है, while at King's College London, which led to the discovery of DNA helix, for which James Watson, Crick, and Wilkins shared the Nobel Prize in 1962. Watson suggested that Franklin would have ideally been awarded a Nobel Prize in chemistry along with Wilkins, but although there was not yet a rule against posthumous awards, माने उस समय posthumous award नहीं था, माने rule, but Nobel Committee generally did not make posthumous nominations. समझ रहे हो? उस दिन तक ऐसा कोई रूल नहीं था कि हम पोस्टफॉर्मसली नहीं देंगे, बट फिर भी नोबेल कमेटी ने नहीं दिया क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म है नोबेल कमेटी पे कि वो लड़कियों को नोबेल प्राइज देने से वंचित रखते थे. तो they did not prefer giving Nobel Prize to ladies. There was a lot of criticism क्योंकि वाटसन ने बोला भाई उन्हें एक इंडिपेंडेंट नोबेल प्राइज दे दो, बट तब लोगों ने माना नहीं. After finishing her work on DNA, Franklin led pioneering work at Birkbeck on the molecular structure of viruses. Okay, and her team member Aaron Klug, you remember tRNA wale Kim and Klug? Yes, sir. Yes, sir. Yes, continued her research, winning the Nobel Prize in Chemistry in 1982. So yes, so this is a great, she is a great lady who unfortunately left the world at a very early age. Fine. So this is the concept of Rosalind Franklin. I have sent you the video to see how she concluded things. Okay, because I am not so much, I don't have so much idea. So about X-ray crystallography, तो उसने उन्होंने बताया हुआ है किस तरह से उन्होंने अपना रिसर्च सारा किया. ठीक है, चलिए. So, but what she concluded we can discuss. So, from her, okay, from her, okay, from her photo, कौन सा 51, from her photo 51, she came to many conclusions which ultimately helped
Watson and Crick to propose the double helical model of DSDN. Understand? So from her photo 51, she came to many conclusions, which which helped them to give this conclusion. Okay. So what are the conclusions? वो हम देखेंगे. ठीक है. तो पहला point that the diameter of DNA helix is क्या? The diameter of DNA helix is 20 angstrom. तो ये उनको conclusion मिला 20 angstrom. So this conclusion she found. So it rejected all the ideas of nitrogenous base pairings. ठीक है. So it rejected all the ideas of nitrogenous base pairings and confirmed that and led to confirmation that that only purine pyrimidine base pairing is possible. Understood? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो डाटा रखा हुआ है. भगवान की बांधनों कहीं भी. So already we have data of Chargaff. Chargaff ने हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि जो आपका A plus G is equal to T plus C and AT is not equal to GC. तो इससे हमें कंक्लूजन ये मिला कि आपका जो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग है वो प्यूरिन पिरिमिडिन ही होगा. एंड टू ऐड टू दिस योर डबल हेलिकल मॉडल का जो फ्रैंकलिन्स मॉडल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द डायमीटर ऑफ DSDNA हेलिक्स उन्होंने इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड ये हमने लिखना भूल गया एंड थ्रू आउट इट्स लेंथ. ऐसा नहीं है कि वेरिएबल है. सुनिए, अगर वेरिएबल होता डीएनए हेलिक्स का डायमीटर तो हम कह सकते थे कि कोई भी बेस पेयरिंग हो सकता है. प्यूरिन प्यूरिन हो सकता है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन हो सकता है या प्यूरिन पिरिमिडिन हो सकता है. किंतु ये जो आइडिया है आपका, इसने बताया कि जो हेलिक्स का डायमीटर है वो कांस्टेंट है एंड पूरे लेंथ में कांस्टेंट है. तो इसलिए ऑल द अदर थिंग्स वाज कैंसिल्ड. कोई शक? नो सर. चलिए, वेरी गुड. सो नाउ नेक्स्ट हमें क्या मिला? तो द नेक्स्ट कंक्लूजन इज she reported 2 periodic events. ओके, उन्होंने रिपोर्ट किया 2 periodic events. ठीक है. नंबर 1 which repeated after every 34 angstrom, and number 2 which 3.4 angstrom. Which repeated after every 3.4 angstrom. तो ये आपको मिला. So उससे इससे मतलब क्या है? So it helped in concluding that the DNA helix coils in
such a manner that one turn of helix, okay, is equal to 34 angstrom. Okay, is equal to 34 angstrom. Okay, and each turn has क्या 10 base pairs. क्यों 10 base pairs? Distance between base pairs is 3.4 angstrom. Okay, so distance between base pair is 3.4 angstrom. क्लियर? तो ये उनको सेकंड कंक्लूजन मिला. ओके, उन्होंने तो बता दिया ये रिपीट हो रहा है, ये कंक्लूजन ये वाटसन एंड क्रिक को मिल रहा है. अंडरस्टैंड? उसके बाद थर्ड थिंग शी सेड दैट शी said that the axial rise is constant. Okay, the axial rise is constant. So the DNA is a straight helix. Is a straight helix and not कर्व हुआ है कि नहीं? क्योंकि अगर आप एक्सियल राइज बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वो हेलिक्स राइट को टर्न करता करता जाएगा. अगर आप कमाते कमाते जाओगे तो वो लेफ्ट को टर्न करता करता जाएगा एंड अल्टीमेटली सी बन जाएगा या यू बन जाएगा. अंडरस्टैंड? बट उन्होंने बोला एक्सियल राइज कांस्टेंट है, इसका मतलब वो सीढ़ी एकदम स्ट्रेट होता है. अंडरस्टैंड? So these are some predictions that she proposed. Okay, तो ये predictions उन्होंने propose किया. Now, okay, these data of Franklin was leaked to J.D. Watson and H.C. Crick by Morris Wilkins. Okay, Morris Wilkins. Okay, who also shared the lab with Franklin. Okay, but Franklin did not know that he was also working on X-ray crystallography. ओके, तो ये उनको पता नहीं था, इसीलिए तो वो अपना सब बात उनसे शेयर करते थे. बट अरे जैसे अभी सपोज आई एम ए जूलॉजी टीचर एंड ओटा इज ए मैथ्स टीचर, मैं उसको जितना भी जूलॉजी के फंडे बताऊं वो थोड़ी लेके ट्यूशन करेगा, वो तो मैथ्स ही पढ़ाएगा ना. तो इसलिए हमारा कुछ लीक होने का टेंशन नहीं. बट अगर वो छुपे छुपे जूलॉजी वाला है तो तब गड़बड़. ओके, who also shared the who also shared the lab with Franklin. Okay, so this is the concept. Now Watson and Crick had their conclusions almost ready, but they had very poor substantial evidence. Okay, these data of Franklin were crystallographic analysis. Baby, were crystallographic.
है कि नहीं? They were crystallographic data. So was unquestionable. समझ रहे हो ना? ये हमने डीएनए को क्रिस्टल बना के उसको देखा हुआ है, तो इसलिए इस पे कोई भी उंगली नहीं कर सकता था. So these data Franklin were crystallographic data, so were unquestionable. This helped J.D. Watson and F.H.C. Crick to propose the double helical model of dsDNA. तो वाटसन एंड क्रिक डीएनए को हम pDNA बोलते हैं. अंडरस्टूड? तो वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए या जो आपका फ्रैंकलिन का डीएनए है उसको हम लोग pDNA बोलते हैं. Okay, all the data which is available about pDNA. This helped James Dalton Watson and FSC Crick, okay, to propose the double helix model of dsDNA in 1953. Okay, for this pioneering work, they were awarded. Okay, they were awarded the Nobel Prize in medicine. Okay, in medicine and physiology. Okay, so they were awarded Nobel Prize in medicine and physiology in 1962, along with Morris Wilkins. Understood? So this is the concept. Okay, so this is the greatness of Rosalind Franklin. हो गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे? So now we will discuss the model. Understand? So ये हमारा, Sir, हाँ बोलो. sir, actually, who disclosed to the world that Franklin had done the experiment? ए बेरा Wilkins. Oh, तो Wilkins है, he was the main problem. क्योंकि वो उधर था, मैंने एक्चुअली फ्रैंकलिन मेड एन अरेंजमेंट कि मैं तभी यहाँ काम करूंगी जब मेरे साथ और कोई उसमें नहीं होगा, बट दे डिड नॉट. चलिए, सो एक्चुअली आई विल कंफर्म दिस डाटा बिकॉज जो विकिपीडिया डाटा होता है ना वो ऑलवेज नॉट एब्सोल्यूट होता है. So I will again confirm references and give you that. Okay. इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है nobelprize.org. Okay, वहाँ जो भी डाटा आपको मिलेगा वो एब्सोल्यूट डाटा है. चलिए, so I don't want to waste time, तो वो बाद में I will send you या I will teach you in class. चलिए, so now we will enter into the majestic era of क्या? Double helical model of double helical model of dsDNA ब्रैकेट में bDNA. ओके, by James Dalton Watson and Francis, अभी is no more, Francis Harry Compton Crick, ब्रैकेट है 1953. ओके, तो ब्रैकेट में 1953. सो इसमें आप लोग अभी जो है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा वाटसन एंड क्रिक है, ओके, सो जो वाटसन एंड क्रिक है, तो दिस पीपल
So James Watson was actually a what? He was a chemist. Fine. Basically, he was a biochemist. Chemist to be more particular. Biochemist I'm telling because he was doing work in biochemistry. Okay. किंतु जो फ्रांसिस क्रिक हैं, he was a physicist. है Physicist. कि नहीं? तो वो physicist थे and ये जो physicist थे, he changed to what? Biology. तो इस पे भी एक बच्चे को केमिस्ट्री में पूछा गया था केवीपीआई में क्वेश्चन, तो वो बोला कि सर एक्चुअली आई रियली वांट टू क्या, तो आई वांट टू डू माय रिसर्च इन क्या, तो ही सेड दैट आई वांट टू डू माय रिसर्च इन फिजिक्स. तो बट उनको पूछा कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो बोला बायोलॉजी. तो देन ही वाज आस्क्ड द क्वेश्चन दैट एक्चुअली हु इज द who name some physicist who turned into biologist. समझ रहे हो? So उसको पूछा गया कि name some physicists who turned into biologist. तो उन्होंने क्या किया? He could not say. So one of the beautiful examples is Francis Harry Compton Crick. तो ये मैंने आपको पेज इसलिए आया हूँ ताकि I will save this page. All these people are related to what? DNA. So that is why उनका फोटो आपको भेजना है, इसलिए मैंने आपको ये पेज शेयर किया है. I have clicked the snap, you will get it in your copy. आप क्या कर सकते हो घर में, जो प्रिंटर से इसको निकाल के कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हो. क्लियर? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट. तो इसीलिए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. सो वाटसन वाज बेसिकली ए व्हाट? ही वाज बेसिकली ए केमिस्ट. अंडरस्टूड? तो उसमें आ जाइए. We'll write some beautiful points about this. Okay, now नीचे आइए. Okay. Now molecular structure of nucleic acids. Okay. So a structure of DNA was first. Okay, a structure of DNA was the first article published to describe the discovery of double-stranded structure of DNA using X-ray diffraction and mathematics of a helix transform. Okay, it was published. Okay, it was published by Francis Crick and J.D. Watson in the scientific journal Nature. Okay, ये बहुत important है, Nature. Actually उन्होंने इसको सेल बायोलॉजी में डालने का कोशिश किया, but वो रिजेक्ट हो गया. So they published this in Nature. Okay, in Nature on pages Etiki of its 171st volume dated 25th April 1953. Very very important data. ये आपको याद रखने के लिए नहीं, ये आपको एक्साइट करने के लिए. Okay, this is to excite you into science. Okay, now this data is often termed the pearl of science. समझ रहे हो? तो इस डाटा, इसको हम लोग pearl of science भी बोलते हैं. ठीक है? Okay, so this article, okay, so this article is often termed a pearl of science because it is brief and contains the answer to a fundamental mystery about living organisms. This mystery was the question of how it is possible that genetic instructions are held inside organisms and how they pass from generation to generation. क्योंकि यही डाटा था जिसने एक्चुअली आपका जो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, which was the basis. So this theory was behind the semi-conservative model of dsDNA. समझे कि नहीं? तो dsDNA का जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, उसके पीछे भी इनका हाथ था.
Understood? So this is the case. Now, what does this model suggest? तो ये जो मॉडल क्या सजेस्ट करता है तो वही हम डिस्कस करेंगे. Okay. Now, this is a beautiful article उसमें. However, the discovery of DNA helix also used a considerable amount of material from the unpublished work of Franklin, Stokes, Wilkins, and H.R. Wilson at King's College London. Key data from Wilkins and separately by Franklin and Gosling were published in 2 separate additional articles in the same issue of Nature. Okay, with the article by Watson and Crick. समझ रहे हो? तो जिस आर्टिकल में, जिस बुक में उनका छपा था, इसमें भी वो आर्टिकल छपा था. The article by Watson and Crick acknowledged that they had been stimulated by experimental results from King's College Literature. तो उन्होंने acknowledge किया कि उनके पीछे इनका भी हाथ है. Okay, so that's why they did not deny the contribution. चलिए, so I will not elaborate this lecture क्योंकि ये कट जाएगा. फिर जब आएंगे हम लोग डबल हेलिकल मॉडल पढ़ेंगे तो you can discuss your doubts. चलिए, तो कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर. सर ये जो लास्ट पेज सर आप भेजेंगे सर? कौन सा? सर ये जो अभी लिखे है. हाँ, all the pages are sent to you provided you subscribe. ना क्या अर्पण, you guide Devasmita, but if you read in quota, तो then JCRT का मिलने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना. चल, और बोलो. तो कर दिया सर. हाँ, very good. वो देखी भी नॉर्मल मारा होगा. चलिए, और डाउट्स पूछे फटाफट, because these are very important topics and I have already warned you that